as we have defined by these particular equations, delta G is equals to minus NFE that we already have discussed it. Okay, we have talked about their applications in terms of how we can calculate a half cell potential. We can calculate a cell potential. So let me talk about another questions. So the question number 35, page number in my note is 31. So in your notebook, it will be there. I hope so, if you have all. But let me just read out the questions. The fuel cell provide a clean electrical energy to the varieties of applications, including automobile and stationary power source. Normally, hydrogen combined with the oxygens to give electrical energy and water. If we use butane instead of hydrogen at 1 bar at 298 Kelvin, the following reaction takes place. So reaction is given as C4H10 gases plus 13 upon 2 O2, okay, and it gives the 4 carbon dioxide gases plus 5 molecules of water, okay. And it also says that if the change in the free energy, so delta G, change in the free energy is given for the reaction is 2746.06 kilojoule per mole. Okay, kilojoule per mole is given, involving 26. So N is also given 26 electrons. Okay, and determine the open circuit potential. So question is your E is asking. Okay, so you can see these reactions and solve the problems. So since you know the values are given, delta G values are given 2746.06 kilojoule per mole and N is 26. So you can easily calculate F is 96500. Okay. So coulomb per mole. So therefore, I can easily calculate these particular equations. So delta G is equals to minus NFE. Okay. So delta G is equals to minus क्या वैल्यू होगा 26 into 96500 into E. Up now delta G is also given. So 2746.06 kilojoule per mole equals to minus 2 into 96500 into E. Okay. So therefore E will be equals to the minus 2746.06 upon 2 into 96500. Let me just correct it. The value which I am using, ये आपका 7 है. Just correct. So this is 7. Okay.
So this will be coming out to be minus 1.09. Okay, 1.09 volts. Up now, your E is found to be negative, right? Up whether this system is the non-spontaneous or not, that you have to see. So since the energy is produced in the reactions, आप reaction देखेंगे जो energy is produced because it is written normally hydrogen combined with oxygen to give electrical energy in water. So energy is producing. So you can say since the energy is producing or produce in the reaction or in the equation, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? It should be spontaneous. भाई एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एक्सपोनेंस होना चाहिए. सो एक्सपोनेंस होने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा जी नेगेटिव होना. तो सो इसका मतलब हो गया डेल्टा जी must be negative. डेल्टा जी must be negative. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? E जो है, E is nothing but minus 1.09. ठीक है, 9.09. So that is 1.09 पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है? आपने यहाँ पे जो इक्वेशन यूज किया है डेल्टा जी इक्वल्स टू n माइनस ई, ये जो है, ये जो माइनस है माइनस डेल्टा जी होना चाहिए था और n f e होना चाहिए. ये पॉजिटिव होगा और तब ये नेगेटिव होगा. ठीक है. So this quantity is nothing but a positive because this values is your energy is produced, so therefore it should be positive, and this quantity should be negative. That's why I at यहाँ पे negative डाला है, क्योंकि ये negative values आ रहा है. डेल्टा जी के नेगेटिव से जो है उसको वो करेंगे जो पॉजिटिव आएंगे. ठीक है. So therefore the answer should be positive 1.09 ऑप्शन आएंगे. Clear? Right? So this is how you can calculate. This is 2014 the questions. Just a minute. This is 2014 NET. Questions. Okay. Now next question is the 2000 NET 2018. Let me just check the questions number. Yes, this is question number 60. Question number 60, page number 34. Okay, in my booklet. So standard cell potential for the reaction. ठीक है, कौन सा रिएक्शन? जिंक और कॉपर का. Okay, so these are giving plus copper. Okay, so now the standard potential E standard is given. Standard potential is given as
1.1 volt. Calculate the free energy change during the reaction. So you have to calculate delta G, right? So now, similarly, this is a very little more simple one. I hope you can easily calculate it. Delta G is equals to minus NFE. Now, E is given. So N is what? How many electrons involved? 2 electrons. So 2 electrons involved. And your F is given. Coulomb per mole. Okay. And E is given 1.10 volt. So delta G is nothing but minus 2 into 96500 into 1.10. Okay. So this value is coming out to be कितना आ रहा है कि 2 minus 212,300 joules per mole. आज इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे हम. So minus 212.3 kilojoules per mole. Okay. So your answer is this much. So you can now check your answer key in your question booklet. Okay. So it will be approximately what you are getting. You are getting the value of minus 212 kilojoule per mole. Right. So this is your answer which you are getting. Clear? I hope all of you understood the point which I am mentioning. Is there any issues on this? Right. So you can raise the question if you have. Anybody has any confusion? Okay. So if nothing is there, then let me go ahead with this. The next point which we will be talking about today is the Nernst equation. Is one of the very important equations for the electrochemistry. Nernst equation. Okay. Now, what is the importance of the Nernst equation? Now, question is why we do study the Nernst equation. Now, Nernst equation relates the Nernst equation relates the potential to the activity, very important point. Activities of chemical species or chemical substance involved in the cell reaction. Involved in the cell reaction. Okay. And to the standard potential. To the standard potential. Just 1 minute to hold down. I had one important call.
Hello. Now, can you hear me? Where is my system? Yes. बताइए. हेलो. जिसने हाथ खड़ा Yes, किए sir, we बताइए. can hear you. Okay, okay, thank you. Any questions? So, okay, anyway, I am just sharing my screen again. I hope you can see the screen. ये कौन कौन हाथ खड़ा किए हैं? हाँ, एक तो हाँ, सीमा बोलिए. सीमा. सीमा. Yes, sir, we can hear you and see the screen also. Sir, आप chat disable से हटा दीजिए ना. Yeah, I'll do that. Or some Swati also asked something. Swati, you have any uh, questions? Swati. I am just checking the chat because chat वाला portion कहाँ चला गया? So now, do I need no one participate can chat? No one now host everyone. ठीक है. Now I open up the chat. I hope you can check the chat option. Now you can write. Yes. So let me just go through your chat and let's see how many is asking something on the. Yes. Activity. Yes. Okay. Okay. I'll do that. Let me also check this. Okay, so let me continue. If anybody has any questions, then the whatever the operating part of your this setting, kindly do not chat among you. Try to do ask me or whatever you want to have any queries. Kindly do that. I don't want to waste all these settings in this. I don't want to waste my time to do all these things. Rather, be disciplined. And if you have any question, you can ask me. Only then I can do all these settings. Is for me also very difficult to set all every time, diverting my teachings to all those. So let me uh, try to confine this. Now, whenever you talk about the relations of potential and activities, okay, activity of chemical species. So you can say sometimes activity mean concentration. Like if you use dilute uh, solutions, आप dilute solution लेंगे तो उसको हम concentration में भी लेते हैं. We all know the relations. So I will define that little bit in the future course of time. You suppose let us consider how these relations built and how relations obtained. ठीक है. जैसे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. ये मान के चलो कि N1 N2 ठीक है N1 B
N1A plus N2B is reacting, and they are converting into the N3C plus N4D. Now this is a reactions it is undergoing. Okay. So now let me define this. Now before the equilibrium or after the equilibrium, what will be the reaction question? Okay. What will be the reaction question? Okay. I hope you understand what is meant by reaction question. Reaction question. Okay. So which will be represented by Q, that is equals to the ratio of the product upon ratio of the divided by the reactants. So the quantity which I am talking about where the reaction question is the concentration of the product N3 upon N4 divided by A N1 B N2, right? So this is the reaction question I am talking about. So reaction question is nothing but the ratio of the product upon ratio of the reactant to the power of their stoichiometric coefficient. Now, these reaction questions are very important term in the equilibrium system because this gives the progress of the reaction before the equilibrium and after the equilibrium. Okay, after the equilibrium. When you talk about these particular point, which I can talk about the at equilibrium में क्या होता है? Rate of the forward reaction is equal to rate of the backward reaction. So at that time, the reaction question can be written as the equilibrium constant. So this term you can also define. Let me just talk about the very important point, significance of reaction questions is now at equilibrium or at a point where the rate of the forward reaction is equals to rate of the backward reaction. ठीक है, दोनों सेम जब होगा तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. ठीक है, जब दोनों का रेट सेम होगा तो इक्विलिब्रियम कहेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पहले मतलब कि ये जो इक्वल्स रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ये स्टेज आने के पहले और इस आने के बाद क्या होगा, वो जनरली ये जो रिएक्शन क्वेश्चन डिफाइन करता है. ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन डिफाइन करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं. ठीक है. Now, what is the meaning of this? Meaning of this and significance of this is this can define the progress of reaction. Yes. कौन कौन हाथ खड़ा किए हैं? सीमा बोलिए. यस सीमा बोलिए. आपने हरा हाथ खड़ा. यस, हमने हैंड रेज नहीं किया. तो आपकी हाथ क्यों आ रहा है बच्चे? ये ऑटोमेटिक था सर. अच्छा, ऑटोमेटिक था. सो एनी अदर पर्सन हु वांट टू आस्क? चैट बॉक्स में किसने लिखा है? How do we know that reaction is spontaneous or non-spontaneous? Data delta is not given. If the E is given, then you can also assess. Mr. Nanlal, you asked one questions that how do we know that reaction is spontaneous or non-spontaneous if delta G is not given? Delta G आपके पास given नहीं है
तो थर्मोडायनामिकली आप निकाल नहीं सकते हैं, बट इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आप निकाल सकते हो। सेल पोटेंशियल आपके पास पॉजिटिव है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है एक्सपोर्टेनस है, और आपका सेल पोटेंशियल जो है नेगेटिव है, तो आप उसको कह सकता है नॉन एक्सपोर्टेनस है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकाल सकते हैं, बट एक्चुअली एक्सपोर्टेनस एंड नॉन एक्सपोर्टेनस आर thermodynamically defined by the delta G only, but in the application point of view, हम हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको एसेस करेंगे, तो हम सेल पोटेंशियल की रेफरेंस में भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एक्सपोर्टेनस है या नहीं है। ई पॉजिटिव हुआ तो एक्सपोर्टेनस है, ई नेगेटिव हुआ तो नॉन एक्सपोर्टेनस है। क्लियर? राइट। सो नाउ रिएक्शन क्वेश्चंस का मतलब अभी आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो रिएक्शन क्वेश्चंस का एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ। द रिएक्शन क्वेश्चन is measure of relative amount of reactants and product, or products and reactants in the reaction at a given point of time, at a given time, ठीक है? राइट, ये है। So is a measure of relative amount of product and reactant in a reaction at given time, ठीक है? So whenever rate of the reaction, forward reaction is equal to rate of the backward reaction, only then this quantity becomes equals to reaction the equilibrium constant। वो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। Now this particular quantity can be used to understand many concepts. Number one, it can assess the reaction on possible way to predict the reaction. So there are three ways to predict the reaction. By using this concept, ठीक है? These concepts, कौन सा concept है, कौन सा conditions है, कौन सा way है? Number one, if you are saying the reaction quotient is greater than equilibrium constant, ठीक है? Equilibrium constant, then you can say the backward reaction, right? Backward reactions, that is what you can say, backward reaction, ठीक है? That means reaction is reversing from the forward reaction. It convert from the backward to the forward, right? So backward reactions due to the participation of excess product in the reaction। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा बन गया है, तो उससे हमारा रिएक्शन जो है आगे नहीं जा पा रहा है, तो वो पीछे जाना शुरू होगा, ठीक है? सेकेंड,
रिएक्शन क्वेश्चन इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन ड्यू टू more of the reactant, more of reactant to favor the formation of product, formation of product। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका रिएक्टेंट यूज किया है वो ज्यादातर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो आगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, आगे रिएक्शन प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक है, एंड सी कंडीशन में Q is equals to the equilibrium constant, then as I already have told you, ये कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। इज इट फाइन? हेलो, राइट? ओके, thank you. Yes. So then next point which I wanted to talk about is, once you understand these relations, once you understand this relation, relations, then in the thermodynamics, the delta G is equals to delta G standard plus 2.303 RT log Q. RT log Q is one of the reaction, the relation you obtain. Okay. Now where I already defined the reaction question here, मैंने Q को already define कर दिया है. So where the delta G, you all know R is nothing but a gas constant. Gas constant. T is nothing but temperature. T is nothing but a temperature. And your Q is nothing but the reaction question. Okay. So this is reaction question. Okay. So now using this particular concept, you can also use the relation that is delta G is equals to minus NFE, and delta G standard is equals to minus NFE standard. So by putting this value, these equation become, now this equation, the equation number 1, now this become what? Minus NFE equals to minus NFE standard plus 2.303 RT log reaction question. Okay. तो आप यहां से क्या ले सकते हैं, माइनस माइनस आप ले सकते हैं कॉमन, तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको हम कैंसिल कर दें, तो माइनस से मल्टीप्लाइड हो गया ना सब में। सो और इसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये वाला कैंसिल, डिवाइडेड बाय दिस, सो आई कैन राइट E इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT upon NF log reaction question. Okay. Now this reaction question where I already have talked about the E is equals to E standard. I am using the same value of reaction question 2.303 RT upon NF log activity of
or you can say activity or a concentration. ठीक है, तो मैं दोनों लिख देता हूं so that you can have any problems with this. CN3 DN4 AN1 BN2. ठीक है, ये concentration term में है. If you want to write this value, E equals to E naught minus 2.303 RT upon NF log. Sometimes people also write activity of C to the power of N3, activity of D to the power of N4, activity of A to the power of N1, activity of B to the power of N2. Okay. So now here I am using activity. Okay. I am using activity, right? So क्योंकि हम dilute for the dilute solution में हम क्या करते हैं, activity is equal to concentration. ठीक है, concentration term we generally use, right? So therefore I am using both are equal in the sense because we generally use dilute solution in electrolytic cell, so we do use this. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे इन फ्यूचर में, बट फॉर द टाइम बिंग यू अंडरस्टूड इन दिस वे. तो आप ए की फॉर्म में लिखें तब भी और सी कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म लिखे सेम है क्योंकि हमने अंदर की डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हुआ है. ठीक है, सो देयर इज नो डिफरेंस इन दैट पॉइंट. ओके, सो नाउ these particular equations which I can say that is what E equals to E naught 2.303 RT upon F and F log concentration C upon N3 D upon D to the power of N4 A to the power of N1 B to the power of N2. ठीक है, these equations you can say is what I am talking about, the Nernst equation. This is what we generally known as the Nernst equation. Okay, this is called as Nernst equation, right? Now you can easily relate that what I already have told you in the definition. The potential is related to the standard potential and the activity, right? So these are the activity or concentration terms which I am defining. Okay, I am defining, right? So this is also defined at 25 degrees Celsius. The 2.303 RT factors, okay, F factors is equals to 0.591. So therefore, this value become E standard 0.0591 upon N, and you can write down reaction quotient. Okay, so this is also the another form of your the Nernst equation at 25 degrees Celsius. You can use the value of quotients जो यहाँ लिखा हुआ है C and D वाला equation को भी आप लिख सकते हो. तो ये this is again the Nernst equation at 25 degrees Celsius. ये equation आपका रहेंगे. Clear? I hope you understand this concept here, right? Now, what is the importance of this Nernst equation? The importance of this Nernst equation is it can be used to calculate the single electrode potential also, and even it can be used to calculate the cell potential of a cell also. Okay, so a very important point which I will be mentioning here is this equation is used to calculate the cell potential and the
single electrode potential, ठीक है, very important point where we can talk about, because we all use cell potential or single electrode potential, so you can use to calculate these factors, right? For example, let us try to understand this. Let us take one example here. Now, if you want to calculate the single potential of a particular reaction, let us say zinc ion is having the 2 electrons to convert into zinc metal. Okay. So now let us see, concentration is 0.1 molar concentration. 0.1 molar concentration. Okay. Now at 25 degrees Celsius. Okay, let us see. Now what is the potential of these reaction? That is reduction potential है. आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया और सॉलिड में चला गया, तो इसका हम कैसे निकाला जाएंगे? ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे. इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है. आपको कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कितना दे रखा है? 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है. ठीक है, और आपके पास जिंक का कंसंट्रेशन क्योंकि सॉलिड है तो इसको 1 लेते हैं हम, है ना, क्योंकि इट इज अ सॉलिड. तो एक्टिविटी जो है कंसंट्रेशन उसको 1 लेते हैं, और आइदर यू कैन से एक्टिविटी इज 1. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नर्स इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.3 RT अपॉन N F log the zinc concentration upon zinc ion concentration. यही लेंगे. I hope this is correct. So at 25 degrees Celsius, the E equals to E standard, ये आ जाएगा आपका 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. हमने सारे वैल्यूज भी पुट कर दिए इसमें. नाउ आप इसका वैल्यूज निकालें. हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू जो है जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट है. सो E इक्वल्स टू माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये 0.1 का मतलब क्या हुआ? 0.1 का मतलब है 10, है ना. 0.1 का मतलब हो गया 10. So this is what value is coming out to be, minus 0.76 minus 0.02955. So that is value is minus 0.79 volt. Okay. So आपका जो E स्टैंडर्ड E सेल जो है E सिंगल इलेक्ट्रोड का जिंक का वैल्यू जो है माइनस 0.79 वोल्ट एट कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? एट जिंक कॉन्सेंट्रेशन इज जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑफ 0.1 मोलर. ठीक है, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू ये होगा. ठीक है, so this how you can calculate the single potential value. I hope you all understood this particular point. Yes. Let me just check the set if anybody has any yes. नीतू कहते हैं repeat
नीतू, कौन सा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया है? Explain the nurse equation once. साक्षी, ओके, ठीक है, ठीक है, हम दोबारा आपको बताएंगे। राइट, अब आप लोग ध्यान से देखें। दिस इज व्हाट फंडामेंटल आइडिया। ये आपको बेसिकली इस आइडिया को, सॉरी, ठीक है, सी दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। रिएक्शन क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया है। इन द thermodynamics what I am talking about, delta G is equals to delta G standard plus 2.303 RT and log reaction quotient. Now where the Q is what I already have defined above is a reaction quotient. ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन जो है वो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ये आपको मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर दिया है। नाउ R is gas constant, T is your temperature, Q is reaction quotient. नाउ डेल्टा G क्या है? डेल्टा G का वैल्यू माइनस NFE है। डेल्टा स्टैंडर्ड के वैल्यू क्या है? माइनस NFE स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। तो मैंने सिंपल क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है इसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है इसमें पुट किया इस इक्वेशन में, ठीक है। इसमें जब पुट किया तो ये वैल्यूज मैं आप इसको 2 मिनट हटा देता हूं, इसका वैल्यूज को मैं 2 मिनट हटा देता हूं। आप लोग इसमें कट कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहा हो तो दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। लेट मी रीराइट अगेन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। सो मैंने क्या किया है, माइनस NFE इक्वल्स टू D माइनस NFE स्टैंडर्ड, सिंपल मैंने पुट किया है ऊपर, ठीक है। तो प्लस 2.303 RT log Q आ गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस, ये जो माइनस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है दोनों तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकता है। तो माइनस, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी आगे हम लिखेंगे तो हमारा NFE इक्वल्स टू NFE स्टैंडर्ड माइनस, सिर्फ पहले माइनस का हमने किया था 2.303 RT log Q, ठीक है। फिर ये जो NF जो है कॉमन है इसमें, तो NF मल्टीप्लाई कर दो दोनों राइट हैंड साइड में सारे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई किया तो NF NF कैंसिल हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो गया, तो कैंसिल हो गया। E इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, लॉग क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। उस पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C&D बना था, उसकी जो है C&D का कॉन्सेंट्रेशन एंड A and B का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, तो ये वैल्यू आ गया। मैंने कहा समटाइम ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो एक्टिविटी टर्म में भी लिखा जाता है, बिकॉज एक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल्स टू वन अनदर when you are using dilute solution. Otherwise activity is equals to C concentration into activity coefficient होता है, ठीक है। activity coefficient जो है dilute solution में 1 होता है, when this is 1 for dilute solution, ठीक है। सो इसलिए हम एक्टिविटी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने
एक्टिविटी फॉर्म में भी यहाँ लिखा है, राइट। तो इसको हम कहते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन जो है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या रिलेशंस आपको पता चल रहे हैं। ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये बाकी सारे कांस्टेंट फैक्टर है n को छोड़ के। नाउ द रिलेशन इज डी ई जो है, ई जो है वो कहाँ पे रिलेट करे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने शुरू में बोला था नर्स इक्वेशन के इंपॉर्टेंस क्या है। नर्स इक्वेशन जो है कॉन्सेंट्रेशन पोटेंशियल की रिलेशन बताता है, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल का भी रिलेशन बताता है। तो यही रिलेशन है जो नर्स इक्वेशन में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये बताया है कि 25 डिग्री सेल्सियस में ये जो कॉमन फैक्टर है उसका वैल्यू आता है 0.059, ठीक है। उसी हिसाब से इस इक्वेशन को भी हम नर्स इक्वेशन बोलते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो मैंने इस इक्वेशन की एप्लीकेशन यूज कहाँ है उसको डिफाइन किया है। मैंने कहा कि ये सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो एग्जांपल है जिंक की रिडक्शन का। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और जिंक मेटल बन गया, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यूज कितना आना चाहिए। कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 है, तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कंसंट्रेशन कितना है वो मैंने लिख लिया है और उस वैल्यू को नर्स इक्वेशन में पुट किया तो हमको ये वैल्यू मिला ये, ठीक है, ये मिला -0.079, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में। तो दिस इज व्हाट द रिलेशन। जब आप कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज करेंगे कि सपोज मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड वैल्यू में -0.76 था, मगर ये किस कॉन्सेंट्रेशन में था, ये कॉन्सेंट्रेशन था कि जिंक का कॉन्सेंट्रेशन जब ये 1 मोलर होंगे तब, ठीक है। तो आपने रिड्यूस किया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, देखो चेंज हो गया। आपने कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस किया तो चेंज हो गया, तो आपका पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन में चेंज होता है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि स्टैंडर्ड तो चेंज नहीं होता है बट पोटेंशियल चेंज होता है व्हेन यू चेंज द कंसंट्रेशन। तो ये नर्स इक्वेशन ने उसको मैथमेटिकली प्रूव किया है कि जब आप एक्टिविटी चेंज करोगे या कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो आपका जो पोटेंशियल भी चेंज होगा। क्लियर, ठीक है, यही चीज है। और कोई और कुछ लिखा है तो बताइए। 7 क्यों, माइनस में -8 होगा ना, माइनस में -8 होगा ना, तभी तो आया है। कृतिका रास माइनस में है तो माइनस हो गया तो बढ़ेगा ना। कृतिका, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेहा लिखते हैं सर व्हाट डज दिस वैल्यू टॉक अबाउट। Since you are having the value of E standard already, so whenever we cell, then value of electrode and cathode, what does this number value minus? Neha, you understand now? Okay. Or Kritika, do you have any problems to understand the value जो आपने लिखे हैं? I am talking about Kritika because she is writing something on the. Kritika is there? Okay, anyway. Okay, no problem. ठीक है. So now let me continue with this. Now अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया है वो एग्जांपल सिंगल पोटेंशियल निकालने का है whenever you are changing concentration, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे एंड हाउ डू वी कैलकुलेट फॉर द सेल पोटेंशियल।
ये आपका जो है नोट में भी होंगे ये क्वेश्चंस, आप एक बार खोज लेना। AFR का क्वेश्चन है, AFR का 2013 के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करता हूँ, बिकॉज यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। व्हाट इट राइट, द सेल पोटेंशियल मैं अपनी फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग electrochemical system at 25 degrees Celsius, ठीक है, at 25 degrees Celsius. Now it is given as the aluminum and aluminum solid here, aluminum liquid here, 0.01 molar, and there is a salvage, iron +2, concentration 0.1, and the iron, ठीक है। अब नाउ प्रोवाइडेड क्या वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम, ठीक है, ये है आपका -1.66, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब रिडक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन है। एल्यूमिनियम 3 गेट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम सॉलिड। इसकी रिएक्शन का वैल्यू हमने क्वेश्चन में दे रखा है। सेकेंड, द स्टैंडर्ड आयरन टू आयरन इज गिविंग -0.44 वोल्ट, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस में। अब देखो इसका रिएक्शन भी वही है, रिडक्शन है, iron, right? So now you have to calculate what? You have to calculate cell potential, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेल पोटेंशियल क्या है, right? So now you can use Nernst equation here. My only objective is to calculate the Nernst equation, because we are provided with the concentration, we are provided with the standard cell also, potential also. So let us try to do these questions here to understand the Nernst equation. Now at 25 degrees Celsius, this whole reaction takes place. So anode में क्या हो रहा है? At anode, because anode is aluminum, जैसे आपकी सेल में ऑलरेडी लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एल्यूमिनियम है, तो आई कैन से एल्यूमिनियम is getting 3 electrons to convert into aluminum. Now solid, aluminum solid. इसका E स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा है -1.66 वोल्ट। और एट कैथोड iron to get reduced to iron S, इसका वैल्यू दे रखा है स्टैंडर्ड में -0.44। शुरू में आप ये डाटा क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब नाउ हमने क्या करना है, हमने सेल रिएक्शन निकालना है। अब सेल रिएक्शन कहां से निकलेगा? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करोगे? पहले इलेक्ट्रॉन दोनों सेम नहीं है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस इक्वेशन को ठीक है, तो मैं पहले बैलेंसिंग करूं कि हम 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 एल्यूमिनियम
get 6 electrons to convert into 2 aluminum. ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने क्या यूज किया, 3 से 3 आयरन, again 6 electrons to convert into the 3 iron. Okay, so now equation में इसको मैं लिख रहा हूं 3 and equation 4 हमने मॉडिफाइड कर दिया. ठीक है, अब नाउ सेल रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे? सेल रिएक्शन हमने क्या बोला था आपको, कैथोड से एनोड को माइनस करना है. तो आपने 4 minus 2 3, 4 से माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आयरन 2 gives 2 aluminum and 3 iron and 2 aluminum 3. ठीक है, ये आएगा. नाउ दिस इज योर सेल रिएक्शन. इसका मतलब क्या हुआ, आपका अकॉर्डिंग टू द नर्स इक्वेशन, आप नर्स इक्वेशन यहां अप्लाई करो. You got the equation. So E cell is equal to E cell standard minus 0.0591, क्योंकि हमने यहाँ पे 25 डिग्री शुरू में लिया हुआ है. इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, और लॉग क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द iron to the power of 3, aluminum to the power of 2 upon the iron to the power of 3, aluminum to the power of 2. और जो concentration है, concentration of iron is 1, concentration of aluminum जो solid की है वो 1 है. तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन का बचा है और आयरन का बचा है, आयन का बचा है. ठीक है, सो नाउ यू पुट द वैल्यू, एल्यूमिनियम आयन का वैल्यू कितना है, 0.01 मोलर, और आयरन 2 का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर. राइट, ये सारे वैल्यूज हैं. और ई स्टैंडर्ड का भी क्या है, ई स्टैंडर्ड का वैल्यू क्या है, ई स्टैंडर्ड का वैल्यू क्या है, ई स्टैंडर्ड वैल्यू इज क्या है, ई राइट, ई कैथोड माइनस ई एनोड. That means 0.44 ball minus 1.66 ball. ठीक है, so this value is coming out to be 1.22 volt. So हम E cell is equals to 1.22 ball minus 0.0591 upon 6 log concentration of 0.01 to the power of 2 divided by concentration of 0.1 to the power of 3. ठीक है, so this is equals to 1.22 ball minus 0.0591 upon 6
ये दोनों को कैंसिल कर दो तो क्या आएगा, log 10⁻⁻1। जब उसका कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया, 1.22 बॉल प्लस 0.0591 अपॉन 6 which is equal to 1.23 ball. So E cell equals to 1.23 ball. I hope you all understood this. Yes, कुछ सेट में लोग ने किया है. सर हमने रिएक्शन 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 स्टैंडर्ड पोटेंशियल मल्टीप्लाई नहीं होगा. यस रिया, मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका है. सर log 10 का होगा, log 10 का तो 1 होता है वैल्यू. ठीक है, आई होप, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस, एनीबडी? You can raise your hand if somebody is not understood. समझ में नहीं आता है तो आप good.
calculate, how do we use it. I hope anybody has any problems, then let me know. Yes, any student? Yes, okay. So let me continue with this. Now let us also talk about another questions. We'll talk about another questions here. Now this is NET 2019. Okay, NET 2019 questions. So now again you have to talk about the calculation of cell potential. Calculation of cell potential. So calculate the cell potential in volt of silver chloride and potassium chloride electrode connected to the standard hydrogen electrode at 298 Kelvin, right? So now the activity which we are talking about, the provided the E standard of chloride ion, silver chloride and silver is given 0.222 volt, and the activity of potassium chloride is 0.01. Okay, molar concentration. Now you can also use the same Nernst equations to calculate these values. So पहले cell क्या है, that you have to discuss it, right? Cell. What is a cell develop? अब now standard potential, standard hydrogen electrode का तो क्या होता है, 0 होता है. तो 0 होता है और सिल्वर का कितना वैल्यू दिखा रखा है, 0.22. इसका मतलब लेफ्ट साइड में आपका हाइड्रोजन रहेगा, राइट साइड में आपके सिल्वर रहेंगे, सिल्वर क्लोराइड. सो प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 1 होता है, एंड पोटासियम क्लोराइड जो इसके एक्टिविटी 0.01 दिखा रखा है, एंड सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर. ओके, नाउ ये जो है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE. ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल भी 0 होगा. ठीक है, पोटेंशियल भी 0 होगा, ई स्टैंडर्ड वैल्यू विल बी 0. ठीक है, तो नाउ यू नो व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द लेफ्ट. ये है राइट इलेक्ट्रोड, and this is your left electrode. Okay, so now let us see at the cathode, what is the reaction going on. As we already have discussed, silver and silver chloride electrode को cell electrode क्या होता है, they get 1 electrons to convert into silver plus chloride ion. ठीक है, then at anode the half of the hydrogen gives
hydrogen ion plus 1 electron. Okay. So now your cell reaction is, cell reaction क्या है? Silver chloride plus half of hydrogen to convert into silver plus chloride ion plus hydrogen ion. Okay, this is what your cell reaction is. Now at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, 298 Kelvin का मतलब क्या हुआ? 25 degrees Celsius. So according to the Nernst equation, E cell is equal to E standard minus 0.0591. इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन. और लॉ ऑफ कंसंट्रेशन का आप सेल रिएक्शन देखो, यहाँ पे आपको ये रिएक्शन देखना है, फाइनल रिएक्शन देखना है. यहाँ पे आप देखो सॉलिड, ये सॉलिड था, ये गैसेस 1 एटमॉस्फेयर था, क्योंकि स्टैंडर्ड में हम 1 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये और ये बचेगा. ठीक है. So I can use this particular concept here is the concentration of chloride, that is activity of the chloride ion into activity of hydrogen ion. ठीक है, यही बचेंगे. और बाकी सब सॉलिड है, क्योंकि ये भी आपको सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसेस है. 1 स्क्वायर लिथियम. E cell will be what? Minus E anode. Now E anode का वैल्यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये वैल्यू है. ठीक है, तो इसका मतलब 0.222 बॉल ही आएंगे. So you can put the value E cell is equals to 0.222 ball minus 0.0591 log, इसका वैल्यू भी 0.01 वैल्यू आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? 0.222 बॉल माइनस 0.0591 log 10 to the power -2 है ना, 10 to -2. इसका मतलब क्या हुआ? -2 आएंगे. तो 0.222 बॉल माइनस ये आ जाएंगे प्लस 2 into 0.0591 which is equals to 0.34 balls. Okay, so E cell is equals to 0.34 balls. Okay, anybody has any doubt? If anybody has any doubt, kindly let me know to the chat or by raising your hand. Yes. Yes, किसी को कोई डाउट है बताइए. Okay, no problem. So I hope nobody has any doubt. So let me continue talking about more of this. Now I also talk about the another form of the concept here by using the whole issues here. So let me talk about another very important point
here. Oh, how much time? 30 minutes. I can talk about this. Okay. Let me. Okay, there's another very important point I just wanted to give you an idea. Yes. So let me talk about the electrochemical concept. Yes. मुकेश जी बताइए. बताइए. मान लो. हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही थी आपके भी क्वेश्चन के बाद आने लगे. दूर से आ रहे थे. वॉइस नहीं आ रहे थे. हाँ, दूर से आ रहे थे. देन इट्स ओके. ओके ओके. तो आप किस पॉइंट में आप कंफ्यूजन है? यस, किस पॉइंट में कंफ्यूजन है आपको? सर पॉइंट नहीं, वो आफ्टर इस सेल जो आपने आंसर लिखा उसके बाद आपने कुछ बोला तो सुनाई नहीं दिया. Okay, okay. I am just talking about the point I just wanted to mention. E cell जो हमारा E cell ये मिल गया है. Now उससे आगे I just wanted to give you another information. I want to calculate little more, but let me also introduce another very important factor or term which will be also required to understand this whole process. So let me add first, then we'll continue calculating few of the example more. Okay. So today I introduce another term is electrochemical potential. So what we can talk about the electrochemical potential. ठीक है, ये बड़ा important point है. You have to understand. I will not go into the derivation part of it, but for the application part of it, I am talking about it. ठीक है, इसको ध्यान से सुनो. Okay, कोई confusion हो तो बता देना. These electrochemical potential term, yes, प्रताप सिंह बताइए. Where is Mr. प्रताप सिंह? हाँ, yes, प्रताप सिंह. सर आपने कैसे डिसाइड किया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के साइड ही होगा? हाँ बेटा, आपको जो गिवन डाटा है, जो आपका, एक मिनट में आपको ऊपर ले जा रहा हूँ. आपकी डाटा जो है, आप ये स्क्रीन दिख रहे हैं मेरा? हाँ सर. यस. तो इसमें मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है, देखो ये वैल्यू है आपका 0.222, राइट? सर वो तो और साइन स्टैंडर्ड, सर अगर हम उसका साइन चेंज करें तब तो हम उसको एनोड में भी जोड़ सकते हैं ना? साइन कहाँ पे चेंज करें? सर -0.222 वोल्ट कर दें तब तो हम हाँ हाँ, मान लो सपोज आपकी कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रोड है, उसमें कोई माइनस डाल दें तो आपकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा है. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो है उसकी पोटेंशियल 0 होता है. ये मतलब अभी मैं आपकी वैल्यू भी दे रहा हूं, ये बाय रेफरेंस इसका 0 होता है. तो 0 से ज्यादा है ये जो 2.222, तो इसीलिए जो है सिल्वर एंड सिल्वर का इलेक्ट्रोड जो है वो राइट में ही होगा, और लेफ्ट में आपका 0 वाला वैल्यू होगा जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि वो कम वैल्यू है. ठीक है, उसी पॉइंट में मैं बताना चाह रहा था कि कब कहाँ पे राइट रखेंगे, कब कहाँ पे लेफ्ट रखेंगे, उसका एक पॉइंट जो है मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ. बाकी जो मैंने क्यों लिया है उसका रीजन यही है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो 0 है, और जो गिवन आपकी डाटा है उसमें 0.22 है. तो इससे ऑब्वियस है कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड जो है वो हायर पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली वो रिडक्शन करेंगे. यस प्रताप. सर हम अगर उसको लेफ्ट साइड जोड़ देंगे तब तो कम एनी हो मोर जाएगा. कंफ्यूजन? वोल्टेज तो तब भी डिफरेंस रहेगा ही. आप देखो ऐसा है, बात सुनो. आपकी जो पॉइंट है, मान लो मैं लेफ्ट में लिखूं, लेफ्ट में मैं ये नहीं कह सकता आप नहीं लिख सकता है,
आप लिखो, जब वैल्यू निकालोगे तो आपकी नेगेटिव आएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है ई जो आपने ये जो निकाला है, ये वैल्यू ई सेल जो निकाला है वो नेगेटिव में आएगा। तो आप उससे अंदाजा होगा कि आपकी कनेक्शन जो है वो आपने गलत तरीके से लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंटली और क्वांटिटेटिवली प्रूव कर सकते हैं। हाँ, आपने करेक्शन यहाँ पे जो है क्यों राइट में लगाया और लेफ्ट में लगाया, उसकी मैंने ऑलरेडी शुरू में भी बता दिया था कि जिसका हायर पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल वो रिड्यूस करेगा, और जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को आपने लगाना है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट somebody raise a hand. Who is that? Mr. Mohan something. दोबारा हाथ कौन है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग थ्रू। Yes, any other student want to ask something? Somebody have raised his hand. How do we decide? नरेंद्र की questions बोल बता दिया है। Yes, someone raise his hand. Anyone? Kindly do again if you want to ask. Yes. आगे चले? किसी को डाउट नहीं है तो आगे चले? Okay, thank you. So, okay, anyway, let me go ahead. Right. So I am talking about electrochemical potential. What I am talking about is the electrochemical potential. Yeah. Electrochemical potential is the combination of chemical potential and electrical potential. ठीक है, राइट। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। नाउ केमिकल पोटेंशियल क्या है? नाउ केमिकल पोटेंशियल इज the escaping tendency, ठीक है, escaping tendency of a charged species such as electron or anions in a phase, एक particular phase में liquid और solid हो, ठीक है, right? So ये escaping tendency है, ठीक है, in a phase, एक phase में, right? Now it generally depends on the electrical potential, ठीक है, right, of that phase, right? So you have to understand the relation between these two, chemical potential and the electrical potential. So let me talk about the relation. The electrochemical potential is equals to chemical potential, that is chemical contributions, plus ZI F and E, right? N and E. This is the relation which developed, right? So where we can talk about
this particular part, we can say mu is the electrochemical potential, right? And the mu standard is nothing but a chemical contribution. That is nothing but a chemical potential. Okay? Chemical potential of the species, and the Z is what? Nothing but charge. F is nothing but Faraday's constant, and E is your electrical potential. E is your electrical potential. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? Now this is nothing but a chemical contribution. ठीक है, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल कंट्रीब्यूशन? ये है इलेक्ट्रिकल contribution. Okay, now when you talk about this particular relation, ये बड़ा important relation है to understand the whole process of reduction and oxidation concept. Now when you talk about this particular relations for the metal, कोई भी मेटल का Z फैक्टर जो है वो 0 होता है. ठीक है, so always the electrochemical potential is equals to chemical potential. ठीक है, for the metals. But for the electrons, क्या होगा? Z फैक्टर जो है -1 होगा always. आपको पता है उसकी वैल्यू 1 होता है. So therefore your electrochemical potential is equals to the electrochemical potential minus Fe values है. ये बहुत बड़ा important relation है. ठीक है, this E relations, right? So whenever you are talking about electron point of view, because electron loss, electron gain, तो आपकी अभी जितनी भी हमने reduction oxidation जो बोला है, electron loss, electron gain की बात है. ठीक है, so here you have to understand this relation. इसको understand करने की कोशिश करते हैं. Fe now. Okay, so since this is the relations, first point you have to understand is, first point you have to understand is these particular equations represents, these equations represents the escaping tendency of electrodes. ठीक है, इलेक्ट्रोड के escaping tendency रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि when a negative electrical potential is applied to an electrode, then the electrochemical potential becomes larger than the chemical potential. What this mean?
this means that the escaping tendency of an electrode escaping tendency of electron of the electrode is increase. मतलब क्या हुआ? The tendency of reduction, there's oxidation. The tendency of oxidation, ठीक है, reaction at the electrode, ठीक है, is increase. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है when E is less than 0, then the electrochemical potential is greater than chemical potential. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? The net escaping tendency is increase. ठीक है, नाउ इसका मतलब ये है कि उस टर्मिनल में ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, उस टर्मिनेशन में ऑक्सीडेशन होगा. ये मीनिंग है इसका. ध्यान से आप ये लाइन को, लास्ट की लाइन को ध्यान से समझने की जरूरत है. ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे आपका ऑक्सीडेशन होगा ही होगा. मतलब ये कि जो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो वो नेगेटिव ज्यादा है तो वो लेफ्ट में रखेंगे. क्यों रखेंगे? क्योंकि उसकी escaping टेंडेंसी ज्यादा है. escaping टेंडेंसी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगा. तो उस इलेक्ट्रोड में आपका रिएक्शन जो है वो आपका ऑक्सीडेशन होंगे, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, उस टर्मिनल में. सेकेंड पॉइंट which I am talking about, whereas when a positive potential is applied, मतलब positive potential is applied to the electrode, then escaping tendency of an electron from the electrode is decrease. मतलब आपका जो है पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो स्केपिंग नहीं करेगा, मतलब वो लॉस नहीं करेंगे. ठीक है, लॉस नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? This means that the tendency, ठीक है, tendency of the electrode to accept the electron, ठीक है, is increase. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन. सो उसमें आपका रिडक्शन रिएक्शन होने की चांसेस होंगे. इसका मतलब हुआ दैट मीन्स दैट ई जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल
पोटेंशियल इज लेस देन केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स द नेट escaping tendency is decrease, very important point here, ठीक है। net escaping tendency is decrease, okay। So now these 2 points are very important. Then third point, let us talk about whenever we are making a cell, जब हम सेल बनाएंगे तो कोई ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हम किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो नाउ यहाँ पे अब जो आपने अभी जो मेरे को बताया था कि आप सर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में लगना है, सो दैट पॉइंट कैन बी इंक्लूड हियर। So when a cell is made, by using two electrodes of different potential, ठीक है, डिफरेंट पोटेंशियल। अभी आप लोग थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट होल्ड डाउन, मैं आपको सारे आंसर करूंगा। ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट पोटेंशियल, राइट, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल में आपका 2 इलेक्ट्रोड है, तो उसी से आपका इलेक्ट्रोड बना, सेल बना, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन reaction takes place at the electrode of higher negative ठीक है पोटेंशियल, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें ऑक्सीडेशन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, लेसर पॉजिटिव पोटेंशियल वाले जो टर्मिनल है उसमें ऑक्सीडेशन होंगे, ठीक है। एंड reduction at the electrode of lower negative potential, ऐसा में इसका लोअर नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, उसका तो हाई पॉजिटिव हो सकता है, लोअर नेगेटिव का मतलब, और हायर पॉजिटिव पोटेंशियल। लेसर नेगेटिव का मतलब हायर पोटेंशियल हो सकता है, और हायर नेगेटिव का मतलब लेस पॉजिटिव होगा, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये देखो दो नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव में ऑक्सीडेशन होगा, लेसर नेगेटिव में रिडक्शन होगा, ठीक है। और आपके पास पॉजिटिव में है, लेसर पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन होंगे और हायर पॉजिटिव में रिडक्शन होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें भी हम एक और पॉइंट क्लियर करते हैं टू मेक अंडरस्टैंड। नाउ सपोज आपकी दोनों पोटेंशियल जो है वो आपका नेगेटिव है, ठीक है, दोनों पोटेंशियल नेगेटिव है, तो आपका ऑक्सीडेशन कहाँ पे रखेंगे, नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव वाले के पास रखेंगे, ठीक है, और रिडक्शन वाले राइट में रखेंगे जो लेसर नेगेटिव है, राइट। अब नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नाउ यहां पे हम एक पॉइंट डालते हैं, बोथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड,
ठीक है, तो हम दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो मोर नेगेटिव electrode on the lesser negative electrode on the right. ठीक है, सेकेंड, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो क्या होगा, लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड on the left while the more positive on the right. ठीक है, I hope you got the point. ठीक है, और थर्ड में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, one is positive and other is negative. तो क्या करेंगे, नेगेटिव को लेफ्ट में रखोगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ्ट while positive electrode on the right. Are you getting my point? Yes. अब समझ में आ रहा है मैंने अभी क्यों, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो 0 है, और हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड क्लोराइड आयन का है वैल्यू, ई स्टैंडर्ड वैल्यू इज 0.222 बोल था। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों 0 पॉजिटिव है, बट लेसर पॉजिटिव को कौन सा रखेंगे, लेफ्ट में, और मोर पॉजिटिव को हम राइट में। ठीक है, सो दिस विल बी लेफ्ट मींस एनोड, दिस विल बी राइट ऑन कैथोड। तभी हमने डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। क्लियर? यस। दूसरा मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने अभी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज -1.66 बोल, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है -0.44। आप कौन सा राय में लिखेंगे, कौन सा लेब में रखेंगे, कैन यू टेल मी? Who will be on the right, who will be on the left? नेगेटिव दोनों हैं, पर नेगेटिव किसकी ज्यादा है? Yes, somebody answer. Aluminium on left, very good, absolutely true, and the iron on the right, very good. This is what I am talking about. So this will be on the left and this will be on the right. समझ में आ गया? So this is how you can decide कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है, उससे भी हम क्लियर कर सकते हैं। So I will be talking about few values of this, उसकी कंपैरिजन भी करेंगे, हम कुछ वैल्यूज आपको देंगे, आप हल्का
पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, so that we can discuss that how we can talk about, but I don't know whether we will be having time or not. 12 बज चुका है. So now let me take the questions. अभी तक जो पढ़ाया है उसमें questions है तो आप बताइए, ठीक है, before I proceed. Yes, if anybody want to ask the questions, so I am opening for the questions. Right. ठीक है मीर साहब, टाइम जो है, हाँ, ओप्पो 15 कौन है? ओप्पो 15, यस, आप बोलिए. ओप्पो 15 सेल रिएक्शन है, नाम आपने लिखा. उसको Yes. जब आप मतलब बैलेंसिंग करने के लिए जब 2 या 3 या फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई नॉट को नहीं करते ना सर? यस, ई नोट को नहीं करते हैं. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ई नोट स्टैंडर्ड पोटेंशियल में मल्टीप्लिकेशन की कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा. यस, नेक्स्ट, somebody has raised another, ये है रिया जी. रिया बोलिए. हेलो सर. यस रिया. यस. हेलो सर. सर आपने एक नेट दिसंबर का क्वेश्चन करवाया था ना? यस रिया. सर उसमें ना एक्चुअली बुक हाँ. में जो क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे, तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है AgCl एंड /AgCl नेगेटिव, तो उससे कैसे पता लग रहा है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है? आपने मतलब लिखा इस तरीके कौन सा क्वेश्चन की बात किया है? जो आपने आज करवाया था नेट दिसंबर वाला. हाँ, उसमें आप क्या पूछ रहे हो? एक मिनट ऊपर करना सर. हाँ, ऊपर सर क्वेश्चन निकालना जहाँ समझ आपने गया. लिखा था वो. यस बोलिए. यस सर, इसमें जैसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, तो बुक में ऐसे लिखा है कि AgCl /AgCl नेगेटिव. अच्छा, आप ये कह रहे हो कि E स्टैंडर्ड AgCl लिखा हुआ है और उसकी वैल्यूज 0.022. नो सर, AgCl साथ में एंड देन AgCl नेगेटिव. AgCl नेगेटिव. यस सर, ऐसे लिखा हुआ है मतलब बुक में. अब पता नहीं वो गलत गलत लिखा है होगा. एक मिनट, लेट मी चेक. आपकी बुक मतलब हमारी जो बुकलेट दिया हुआ है. यस सर, उसमें ऐसे लिखा हुआ है. बेटा बुकलेट, हाँ, लेट मी चेक. कोई बात, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. हाँ, इसमें जो है ना, इसमें लिखा हुआ है, हाँ वो गलत लिखा हुआ है. कोई बात नहीं बेटा, वो गलत है. वो नोटेशन गलत लिखा हुआ है. गलत इसी सेंस में है कोई AgCl AgCl माइनस, हाँ वो गलत लिखा हुआ है. लिखेंगे ऐसा ही, ठीक है, वो गलत प्रिंटिंग किया हुआ है. ये है, या आइदर ऐसा लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, है ना, दोनों में से एक चल जाता है. कॉमनली पीपल लिखते हैं ऐसा, मतलब दिस इज मोर कॉमन वन. ये जो मैंने अभी क्वेश्चन में लिखा है, समटाइम पीपल डू आल्सो राइट विदाउट कंसीडरिंग दिस ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट लिखा है, बट लिखा जाता है. ओके सर. हाँ, वो करेक्शन आप करो, ठीक है. ऐसा नहीं, कभी भी नहीं आएगा वो क्वेश्चन में, वो मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है, वो गलत. हाँ जी, ओके सर. यस. हाँ, और एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और है? Anyone? Yes. How class is required, sir, to complete the syllabus of electrochemistry? राम, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है. How class is required, sir, to complete the syllabus? How long? कितना टाइम? हाँ, how many classes? ठीक है बेटा, देखो ऐसा है, खत्म तो मैं आज भी खत्म कर सकता हूँ. मैं आपको बोलूंगा कि भाई खत्म हो गया तो खत्म हो गया. पढ़ना है तो आपको समझ के पढ़ना है, इसलिए समझा रहा हूँ. अदरवाइज क्वेश्चन सारे एक दिन में करा तो खत्म हो सकता है एक दिन में.
बट इट विल एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड होल प्रोसेस। कल को आप पढ़ के जाओगे और समझ के जाके कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक होंगे तो आपको कम से कम 30 क्लास मिनिमम लगेंगे, 25 से 30 क्लास मैं आपसे कह सकता हूँ। सर क्वेश्चंस नंबर बताओ, दो ट्राई करते हैं प्रीवियस ईयर। हाँ क्वेश्चन बेटा आप लोगों को सेट दे रखा है, लिविया आपको क्वेश्चंस दे रखा है, जो है उस क्वेश्चंस को आप जो जो सिलेबस हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको अटेम्प्ट करते जाओ। उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ बता रहा हूँ। सर क्या है, मोहम्मद इरफान क्या लिखा है, इस बाजी से नुकसान होगा। मोहम्मद इरफान क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया। Okay, if there is no questions, then let me stop. If you have any questions, then you can ask me. अभी भी टाइम है, कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। किशोर, यस, सिलेबस हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो ऐसा है, सिलेबस जो है वो टाइमली होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, पर समझ के पढ़ो। कोई भी चीज पढ़ो, आप एक सिलेबस पढ़ो, दो सिलेबस पढ़ो, तो समझ के पढ़ेंगे तो आप उस क्वेश्चंस की मॉडिफिकेशन चेंज करके भी आता है तब भी आप कर पाओगे, नहीं तो आप जो है मुश्किल होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सर जो दिसंबर 20 वर्ड क्वेश्चन है क्या है, क्यू की वैल्यू कैसे आए हैं, क्यू की वैल्यू कैसे आए हैं। अच्छा ये है मनप्रीत। मनप्रीत बेटा क्यू के वैल्यू कैसे आया है, क्यू का वैल्यू एक मिनट, किसी ने राइज किया है वो भी मैं देख लेता हूँ। somebody राइज, इससे किशोर, हाँ यस किशोर बोलिए। हेलो सर। यस सर अभी एक क्वेश्चन नहीं का 2019 का। हाँ हाँ उसमें सर नीचे लेना 25 डिग्री सेंटीग्रेड को किया है ना आपने, यस एक्टिविटी के नीचे कुछ नहीं लिखा, वो क्यों नहीं लिखा? ओके यस द सेम क्वेश्चन। आई होप मनप्रीत ऑल्सो, मनप्रीत एक बार बोलिए। मनप्रीत आप यस सर, बोल सेम पा रहे हैं? क्वेश्चन। यस सर, हमारा भी ओके यही सेम सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन है। यस यस कोई बात नहीं, मैं समझ के अभी बताऊंगा। अच्छा कृतिका, कृतिका आप ही क्वेश्चन भी बता दीजिए। यस कृतिका। हेलो यस कृतिका आप बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो नर्स इक्वेशन के बाद जो सॉल्व करवाया था एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा बोलो। सर इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर। हाँ 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 बोलो बोलो। सर हाँ हाँ उसमें आपने ई का वैल्यू फर्स्ट में हाँ -0.76 लिखा वी। यस यस सर वो कैसे आया? मतलब पहले ही आपने वो वैल्यू लिख दिया, वो माइनस वैल्यू कहाँ से आया? 0.44, नहीं सर, -0.76। माइनस 0.76, हाँ 0.76 वैल्यू बेटा दिया हुआ है, क्योंकि जिंक का पता है वैल्यू आपकी ना, ये वाला वैल्यू। हाँ आप ये वाला वैल्यू कह रहे हो ना, ये जिंक की यस सर, ई स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड। हाँ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मैं ना कल आपको लिखवाऊंगा, आज लिखाना था तो आज टाइम खत्म हो गया, अदरवाइज ये वैल्यूज मैं दूंगा। ये वैल्यू जिंक की स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। ओके सर। ये नॉन वैल्यू होता है, अदरवाइज एग्जाम में भी देंगे आपको, ठीक है। दूसरा, नाउ कमिंग टू जो मनप्रीत और इसने जो पूछा है उसमें मैं आ रहा हूँ। यस मनप्रीत और आप लोग सुन रहे हैं? यस
यहाँ पे देखो इस क्वेश्चंस को, रिएक्शन क्वेश्चंस क्या होगा, रिएक्शन क्वेश्चंस होंगे आपकी कॉन्सेंट्रेशन और या एक्टिविटी की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्टिविटी ऑफ सिल्वर इनटू एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन इनटू एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये तो हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएगा रिएक्टेंट का, एक्टिविटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू एक्टिविटी ऑफ उसकी टू द पावर ऑफ 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक्टिविटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है, क्योंकि सॉलिड है तो 1 हो गया, एक्टिविटी ऑफ सिल्वर भी है, सॉलिड है, ये भी 1 हो गया। एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो 1 एटमॉस्फेयर यूज होता है, मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन गैसेस वाला 1 एटमॉस्फेयर यूज होता है, तो 1 हो गया, तो टू द पावर ऑफ हाफ भी 1 हो जाएंगे। तो ये जो तीनों वैल्यू आपका 1 हो गया, ठीक है, सारे वैल्यू 1 हो गया, तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, ये 1 हो गया तो हमारे बचा A माइनस इंटू A हाइड्रोजन आयन, ठीक है, बाकी भी 1 हो गया तो यही बचा, तो दिस व्हाट आई एम राइटिंग। यस मनप्रीत, और यू गॉट द पॉइंट किशोर, किशोर और मनप्रीत? यस सर। समझ में आ गया किशोर? यस सर, थैंक यू सर। हाँ यस, कृतिका आपको समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ओके, और मनप्रीत जी कहाँ रह गया? सर जो अपन कन्वर्ट करते हैं लॉग की वैल्यू दे रखी रहती है कि याद करनी पड़ेगी? हाँ लॉग की वैल्यू थोड़ा कुछ लॉग टेबल वगैरह देते हैं, और थोड़ा कुछ छोटा मोटा जैसे होता है ना, जैसे टू द पावर 0.001 वो तो 10 टू की पावर में चला जाता है, अदरवाइज थोड़ा कुछ याद करे तो ठीक रहता है, पर अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लॉग टेबल जरूर देंगे, तो लॉग टेबल देखना थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा कुछ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, डोंट बी वरी अबाउट मच, बस थोड़ा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। सर इसमें ये वाले क्वेश्चन में हाफ H2 क्यों लिया? एक मिनट रुक जाओ। यस सर। तो सर मैं 5 मिनट में फोन कर रहा हूँ, क्लास में है। हाँ बताइए सर इसमें हाफ H2 क्यों लिया? हाफ H2 इसलिए लिया है कि देखो आपको ना हर चीज याद करना है, चीजें याद कैसे करना है, आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने पढ़ाया था आपको शुरू में, ये तो भूलना नहीं है ये चीजें। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आइदर हम रिडक्शन लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं 1/2 ऑफ, ठीक है, जो मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन में ये पढ़ा दिया था, या हम 2 हाइड्रोजन लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये 1 गैस आएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की बेसिस पे हाफ लिया है, क्योंकि हमको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से हमारे काफी है, हमने 2 करना है तो मल्टीप्लाई 2 कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा ये जो सेल रिएक्शन की जो जरूरत है वो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोनों में, तो फिर हम कई इलेक्ट्रॉन यूज करके यहाँ लिख सकता है। This is how I write, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो आपको का समझ में आया? Yes, any other? और किसी को डाउट है?